This conference will now be recorded. Okay, so yesterday, day three, what we have learned, we will quickly go through that one so that you can relate to the today's session also. Clause of confidentiality, I am again reiterating the content, the diagrams has been sourced from the internet, from some books. So please do not share it anywhere on the public platform. Keep it with you. Study as much times as you want. Okay. Yesterday we went through the basics of the blast furnace, iron ores, various types of iron ore, their availability worldwide as well as in India. Various impurities that were present in the ore, which is known as gangue material. And then we have learned about the iron ore processing through cross flotation or magnetic separation. And after that, the sintering and pelletization process. So let us quickly go through that one. This was the overview of a complete steel making process. And yesterday we have learned, we started this section, the first one, and some part of the blast furnace. So in the blast furnace, the requirement is iron ore, limestone, and coke. Okay, this is a typical picture of a blast furnace, cross section of a blast furnace. The hot air is blasted from the bottom side through the tiers, and because of that blasting, it is called a blast furnace. The air will move towards top. There is a layers of coke and iron mixed with the limestone, and then there is some reactions happen, because of which iron oxide is reduced to form iron. So this is another pictographical view of a blast furnace. Different zones, right from throat, stack, belly, wash, hearth. Then we saw the one of the biggest blast furnace which was installed in the Bhilai steel plant, having 36 tiers to blast the air, hot air. Iron ore types, total 6 types, out of which magnetite and hematite are the purest one, and it is much sought for the steel making process. Then we have seen yesterday one different graph or the different map wherein a worldwide iron deposit has been shown. Today I am showing you something different. I have researched and found that this is the latest one, with Australia having the highest deposit. The blue line what you see is the iron content, and the blue one is the sky blue one, faint blue is the crude ore. So Australia is having 48,000 million tons. This is in the million tons. Okay. So Australia is having the highest ore deposit, followed by Brazil, Russia, China. Okay. India is at 5,500 million metric tons of iron ore deposit, out of which in which there is a iron content is of around 3,400 million metric tons. This is the latest data, and it keeps on changing also, because geological surveys are carried out and people found the different ore deposits, iron ore deposits also. So, This is, yeah. sir, previously you have mentioned that China have higher amount of iron ore deposit. Yeah, because that data was of 2010. That's why I said I have again researched and found that this is the latest data. Okay, sir. Okay, sir. It keep on changing. It keep on changing because
what happens, it depends on the extraction also. If you have the reserve, but you keep on extracting more, so the more you extract, your deposit will go down. And secondly, Okay. new ore deposits are being found by the during the geological survey. Yes. That's why I have included, and I'm repeating this in today's session also. And this is the latest data. And this is one of the mine, the Carajás mine located in Brazil. And how the mines look, the iron ore mines are seen like this. And it contains approximately 7.2 billion tons of iron ore. Okay, so single mine is having 7.2 billion tons of iron ore. Now coming to the iron producing, who produces the iron ore? This is the data of 2019. Worldwide production is of 2.85 billion tons. That will be 2850 million tons basically in 2019. So Brazil has more, but who has produced more iron ore production is by the Australia. They have produced almost 930 million tons of iron ore, which is having around 580 million tons of iron content. So in the previous graph, you saw that Australia has the highest reserves, and they have produced highest also. So out of that 48,000 million tons in 2019, they have excavated 930 million tons of iron ore. Okay. Then Brazil, followed by Brazil, China, India, and Russia. Then we went through the iron ore deposits also, where it is found majority in Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, Goa, and largely with the high quality iron ore, that is hematite and magnetite. Then the various impurities, that is the gangue material, silicon dioxide, manganese dioxide, calcium oxide, magnesium oxide, aluminum oxide, phosphorus compound, and sulfur compound. So because of the presence of these impurities, some amount of these elements, because these are the oxides or compounds, but when we do the refining process of steel, the oxide gets reduced, but elemental phosphorus, elemental sulfur will be present in the steel. So this is the source from where it is come to the steel. These are undesirable compounds, but you cannot remove them completely. So they will be present in the steel to certain extent. The lower it is, better the quality of the steel will be. Then we learned about what is the processing is carried out on the iron ore. Iron ore, when it is extracted, it will be in the bigger lumpy form. You cannot directly put it into them. So what is done? It is crushed using a cone crusher, jaw crusher, or various type of crusher, industrial crusher, to 15-20 millimeter, 10 to 20 millimeter of diameter. So 10 to 10 millimeter of diameter you can directly use in the blast furnace. But during this crushing process, you will get very fine material also, which cannot be fed to the blast furnace. So what is done? It can be purified or directly sintered or pelletized. There are two ways. It can be processed using the froth flotation or magnetic separation. So gangue material can be removed सर from it. Yeah. सर कोन क्रशर और जो क्रशर में डिफरेंस क्या है? उसका जैसे आपको दिख रहा है ना, उसके जो एक्शन है बेसिकली, अगर आप ये देख रहे हो कोन क्रशर, इट्स लाइक अ कोनिकल थिंग, उसकी जो जॉ है इट्स लाइक अ कोनिकल थिंग. ओके, एंड कोन क्रशर की जो कैपेसिटी रहती है जॉ क्रशर से थोड़ी कम रहती है. जो उसकी आप देखोगे यहाँ पे मोटर है और उसके रोटेटिंग मोशन से वो फिर कभी इधर हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज क्रशिंग. It is one of the technology that is having a conical shape.
in the center. Okay, sir. एंड जॉ टाइप में जो रहता है वो वन साइड से क्रशिंग करता है, वन साइड में स्टेशनरी पोर्शन, वन साइड में जॉ से जॉ टाइप में क्रश करता है. It's like a jaw. अच्छा, मूवेबल, बराबर सर. तो प्रोसेसिंग आयरन का होता है बिकॉज इट इज अ tedious process as well as cost is involved. It depends whether to use this processing of ore or not, है ना. कभी अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे और लगता है कि नहीं, इट इज बेनिफिशियल टू डायरेक्टली पुट द आयरन ओर दैट 15 millimeter 20 millimeter to the blast furnace, then people will not do this cross rotation thing, okay, or magnetic separation thing. Whatever the fines are generated during the crushing operation, it can be pelletized or sintered again to feed into the blast furnace. You cannot directly use this fines, whatever the small 1 millimeter or less than 1 millimeter ore particles are there, you cannot use in the blast furnace directly. So it will be sintered by baking process and converted to around 15 millimeter 20 millimeter small blocks. We have gone through the pelletization process also. Same way, it will not be melted, it will be in a you have to bake it just to form the bonding. As I said, when you remove the ore from the mine, you cannot directly use in the blast furnace because of the big boulders or the big stones. Then you have to crush it. After that, you will get the fine. That fine cannot be used, so you have to do the pelletization or sintering. Before that, to remove the gangue, you can do the cross rotation or magnetic separation. So every iron ore is not, which is going to the blast furnace. Blast furnace में जो iron ore जा रहा है, it will not always be processed through the cross rotation or magnetic separation to remove the impurities. It will depend on the requirement and the cost benefit analysis. So what we have studied in detail, it was iron ore impurities found in that one. Blast furnace we have seen yesterday. Worldwide iron ore availability of iron ore in India, how to process the iron ore, sintering and pelletization. So these things we have covered. Okay. Now what we are going to see today, that is the day 4th of steel making. We will see blast furnace. Again, overview of the blast furnace, because there are some temperature or reactions involved that I will include today. Oh, sorry, it was similar thing. Sorry, it was skipped. So I will remove that one. So what we have included today's session is that we have a DRI lime. We will discuss about the limestone. Then we will discuss about the coke oven process, because we have to have, now you have the iron ore. Now we will study about limestone and then about the coal, coking coal, and coke, how the coke is manufactured, because these three things are required to feed to the blast furnace. And we will also study about the DRI process, that is directly reduced iron. The DRI process is an alternative method to blast furnace, and that DRI is used in the steel melting where the electric arc furnace or induction heating furnaces are used. So that we will see. Again, those who have come late, please do not share this presentation or the content or the video on any of the public platform. Keep it with you for your personal use. Now coming to the limestone. So we will just go through the picture, overall picture of the, this one. So here, to feed the blast furnace, you need coal that will go to the coke oven furnace, and you form coke, limestone, and iron ore. These three things will be required for the blast furnace. So we studied about the iron ore. Now it is a turn to study about the limestone and then about the coke. So limestone is nothing but a calcium carbonate. Okay, and while limestone is used
to remove the impurities during the iron making process in the blast furnace. And that mostly it is of the impurities are mostly silicon dioxide, that is SiO2, or you can say sand, because iron ore is extracted from the ground. So there is a huge amount of silicon dioxide present in the iron ore. So what will happen with this silicon dioxide when it reacts with the calcium carbonate, that is a limestone? So that calcium carbonate will react with the silicon dioxide to form calcium silicate, that is calcium silicate is CaSiO3, which is also known as slag. तो जो हमने blast furnace में दिखाया था, the slag will be floating on the surface of the molten metal. So that is nothing but a majority is of calcium silicate, that is CaSiO3. So what is the reaction? When you have calcium carbonate will decompose to have lime, that is CaO, calcium oxide, and CO2 gas. So gas तो ऊपर से निकल जाएगा अपने blast furnace में, and the CaO will react with SiO2 from the iron ore to form the calcium silicate. And as calcium silicate is having lower density, it will float on the top. है ना? ये कुछ नहीं, जो हम चूनखड़ी जो बोलते हैं, जो कभी कभी आप व्हाइट कलर के खेत में या कहीं पे जो हिल्स रहते हैं उसमें जो आपको व्हाइट कलर की स्टोन दिखते हैं, दैट इज नथिंग बट अ लाइमस्टोन, है ना? नाउ कमिंग टू द कोक. लाइमस्टोन का आपको ये समझ में आ गया है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन? टू रिमूव द इम्प्योरिटी. सो यू हैव आयरन ओर एंड limestone, which is acts as a flux to remove the impurities from the iron ore. Now we need coke, which is a media for combustion as well as acts as a reducing agent also. So the coke acts as a reducing agent and acts as a fuel also, because from where you will get the heat, you have to melt the iron, you have to get the temperature almost 1600 1800 degrees centigrade. So from where you will get that one? About 1300 degrees centigrade. So from where you get that one? You will get it through the coke only. But why the coal is not used directly? Anyone can answer why the coal is not used? Why you want to make the coke? Why some extra process has been added? The coal generally consists 20-30% of volatile material. Yeah. And what will happen because of that? Because of that volatile material, what will happen? It will burn, sir. Obviously, it will burn. No, but what it will form? After burning, if there is some unusable material, if it burns, what it produces? I'm not sure, sir. But it would react with the iron ore, and I'm not sure, sir. Okay. So that volatile material will produce the smoke. A lot of smoke will be generated because of that volatile material. Okay. Just a minute. Who is there? Please caller 3. This name. Whenever you join in, all the people, please join in with your real name. There, I can see one person with the caller 3. I have to dismiss you right now, and you can join in again, with the real name. Please, when you join in through the this GoToMeeting app or GoToMeeting web also, please enter your real name. I cannot allow any anonymous users or anonymous participant because of the privacy of the people and because of the policy. So I am dismissing caller 03. Please join in again. Okay, sorry. So the coal what we have, basically anthracite is not a coking coal.
बिटुमिन टाइप का जो कोल होता है, सो इट इज हैविंग वोलेटाइल मैटर. हाउ मच? 20 to 30%. But if you use coal directly, it can produce lot and lot of smoke. The amount of coal what is being used during the blast furnace operation इतना ज्यादा स्मोक क्रिएट करेगा कि आजू बाजू के जो एरियाज है, इट विल बी कंप्लीटली कवर्ड विद द दिस कोल, दिस स्मोक. दैट्स व्हाई it is converted to coke. So how you will convert to the coke? You have to remove this volatile matter, but you cannot burn. Once you burn it, your coal की जो calorific value है वो भी निकल जाएगी. It will get burned. So how you will form the coke? It is through the coke oven. And जो भी coal हम use करेंगे, it should have a caking ability. It should form the cake. Anthracite जो coal होता है, anthracite which is having high calorific value also, it cannot be used for a coke manufacturing, क्योंकि इसके अंदर caking ability नहीं रहती है. So you have to use bituminous type coal. लिग्नाइट रहता है, बिटुमिनस रहता है, उस टाइप की कोल हमको यूज करने पड़ेंगे. Sir, yeah. Sir, I have not understood caking abilities. केकिंग इज you should form a cake. जैसे अगर हम उसको हाँ केक फॉर्म करते हैं ना, जैसे वो फ्यूज होके एक दूसरे के साथ फ्यूज होने के बाद उसने कैसे सॉलिड फॉर्म करने को होना. अच्छा, ओके. है ना, जस्ट लाइक योर केक जो रहता है हमारा, केक इज अ इंटीग्रल पार्ट ना, इट इज नॉट अलग अलग नहीं है. तो जब एक दूसरे के साथ ये होगा तो इट शुड फॉर्म अ केक. जैसे अगर आपने के सैंड को गीला करते हो, जस्ट सैंड को विदाउट सीमेंट, कैन यू फॉर्म अ, जो अगर थोड़ी सी कोर्स सैंड रहती है, अगर आप उसको पानी में गीला करके रखते हो तो कैन यू फॉर्म अ केक? नहीं सर. सेम लाइक क्ले को आप अगर पानी में ये करते हो, पानी डाल के उसको फॉर्म करते तो वो क्या करेगा? केक फॉर्म करेगा. यू कैन मेक अ कंपाउंड आउट ऑफ दैट. बट अगर वही सैंड है, कोर्स सैंड है, फाइन सैंड तो जो सी सैंड रहती है तो बना भी देते हैं, बट जो कोर्स सैंड है आप उसको अगर केक बनाना चाहोगे तो यू कैन नॉट मेक अ केक आउट ऑफ दैट. सो दैट इज अ केकिंग एबिलिटी. सो क्ले हैज अ केकिंग एबिलिटी, बट कोर्स सैंड डजंट हैव द केकिंग एबिलिटी इन एट रूम टेम्परेचर. जैसे हाई टेम्परेचर जाओ कि डेफिनेटली सैंड को भी आप केक बना सकते हो. सो कोक मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक स्टेप क्या है? कोल इज देयर, देन यू हैव टू फीड इट टू द कोक ओवन. अब कोक ओवन में उसको क्या करना है हमको? यू हैव टू हीट दैट वन, बट इन द absence of air, because if the air is there and temperature is there, the combustion will start, the coal will start burning. So you don't want it to burn, you want to just remove the volatile matter from the coal. So you have to heat that coal in the absence of air in the coke oven. Schematics is there in the next diagram. You will better understand. You people will better understand. And that heating will be carried out for almost 15 to 20 hours. Temperature 1100, or you can say 1100 degrees centigrade. Maximum temperature of that coke oven, it can go to 2000, but normal operation is carried out at 1000 to 1100 degrees centigrade. And once you do this one, what will happen? The coal, the volatile matter goes out at that temperature, and the coal becomes plastic. फ्यूज होता है. प्लास्टिक मीन्स एकदम ये नहीं होता है, हार्ड नहीं बनता है. इट बिकम्स अ प्लास्टिक नेचर एंड इट स्टार्टेड टू फ्यूज टुगेदर. जो कोल हमने कोल के ब्लॉक्स डाले हैं, नाउ दे स्टार्ट टू फ्यूज टुगेदर. और उसके बाद में उसको वाटर में क्वेंच करते हैं, या तो फिर एयर में नहीं कर सकते, बिकॉज दैट टेम्परेचर वंस इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, अगेन इट विल स्टार्ट बर्निंग. तो आइदर इनर्ट गैस जो रहती है, नॉन रिएक्टिव गैस रहती है, उसके अंदर क्वेंच करते हैं, और इट कैन बी क्वेंच इनसाइड द वाटर. ठीक है. कोक साइज की जो होती है, इट विल बी राइट फ्रॉम 40 मिलीमीटर टू 100 mm. जो ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है, दैट इज हैविंग अराउंड 40 mm to 100 mm साइज.
एंड जो हम ओवर यूज करते हैं या पैलेट्स यूज करते हैं, दैट इज हैविंग अराउंड साइज हाउ मच इट इज अराउंड 20 मिलीमीटर, 15-20 मिलीमीटर की साइज होती है उसकी. As I told you, why coke is required? Directly because of the smoke generation. And it has tremendous amount of smoke. और साथ में ही कोक की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इट इज हायर देन द कोल. मीन्स इट कैन जनरेट 1 kg ऑफ कोक कैन जनरेट मच मोर हीट देन 1 kg ऑफ कोल. अगर हम फर्नेस की बात करें तो द अमाउंट यू कैन see from here, if you want to produce 1 ton of pig iron, you will require how much tons of coke? You will require half a ton of coke. So 2 ton of pig iron can be produced from 1 ton of coke. So 50% of coke requirement is there in terms of tonnage. So you can imagine if you are producing 9,000 tons of hot metal, you are burning 4,500 tons of coke. Or instead of that, if you are going to use, definitely it will be much more required. Coal will be much more required, and that coal will produce tremendous amount of smoke. That's why coke is used. And जो कोक बनाने के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मैटर रहना जरूरी रहता है कोक बनाने के लिए, है ना. तो दैट्स व्हाई अराउंड 26 to 29% वोलेटाइल मैटर अगर रहता है, इट कैन फॉर्म बेटर केक. दैट कोकिंग जो प्रोसेस है उसमें अच्छे से बन जाता है वो. समटाइम्स different types of coals are also used to make this blend, proper blending, that is 26-29% or 30% of volatile matter. This is a typical cross section of coke oven process. Just have a look, and there at the bottom you can see various stages of cooking process also. Just for a half a minute we can have a look at that one. Now here you can see what is there. It is a क्या है इसमें, ये क्या है, कोल है, एंड इट इज अ फ्लेम. और दोनों के बीच में क्या है, देयर इज अ पार्टीशन थ्रू द ब्रिक लाइनिंग्स आर देयर. अभी आप अगर देखोगे साइड व्यू, आप अगर इस साइड देखोगे, आप दिखेगा कि यहाँ पर हीटिंग है, यहाँ पर हीटिंग है ना, दोनों साइड से हीटिंग है, एंड कोल बीच में है. तो एक टेम्परेचर इसको मिलते रहता है, एंड यहाँ से हम उसको लोड करते रहते हैं. और दिस इज अ गैस कलेक्टर, जो भी इसमें से वोलेटाइल मैटर निकलता है वो उसको वहां पे कलेक्ट करते रहते हैं. ये साइड में देखिए आप, यहाँ पर कोल बेड है और यहाँ पर हीटिंग चैनल है. कंबशन एयर जो है यहाँ से जा रहा है और फ्यू गैसेस यहाँ से बाहर आ रही है. अभी जब हम कोक बन रहा है, व्हाट इज द स्टेजेस, यहाँ पर क्या है, ड्राई कोल. इफ यू सी दिस वन, दिस इज अ ड्राई कोल. आप इसके साथ कोरिलेट कीजिए. देन एज द टेम्परेचर राइजेस यू विल स्टार्ट, इट इज फ्यूजिंग. यहाँ से क्या होता है, ये फ्यूज होना शुरू होता है. देन देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड कैरिक प्रोसेस. वो कैरिक प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ पर इनिशिएट होता है, जिससे कि फिर हमको कोक मिलना शुरू हो जाता है. तो हियर नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट, कोक. So this is how coke is produced. So you are basically in the coke, you have to understand, you are removing the volatile matter, unwanted material, by heating it in absence of air and making it plastic. It fuses together and then it is quenched. और जब उसको quench करेंगे तो क्या होगा, it is quenched to form the cake. That you have to understand. Okay.
तो कोक में किसी को इशू है कोई? बिकॉज वी विल मूव टू द DRI, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन, बिकॉज वी आर लर्न अबाउट द आयरन ओर, वी आर लर्न अबाउट द लाइमस्टोन, and we have learned about the coke. Now, So, yeah, what is the use of loading holes? लोडिंग होल यू हैव टू लोड ना, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, वो जो फ्यूज होते रहता है मटेरियल वो निकलते जाएगा, तो आपको लोड कहाँ से करोगे? यू कैन नॉट ओपन ना, सो यू हैव टू लोड द मटेरियल फ्रॉम हियर. Then there are so many loading holes. They are almost. You can see from here, this is the side view. Okay, this is the side view. So this cooking chamber, how many cooking chambers are there? This is the long one ना, lengthy one. This is, तो ये पूरे बेड में डालना है ना हमको. अच्छा. है ना, तो अराउंड ये 10-10 मीटर 15-15 मीटर के रहते हैं ये. तो आप सोचो कि ये पूरा ऐसा एक चेम्बर है, तो यहाँ से भी लोड करोगे, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप सभी 3-4 होल से उसको लोड करोगे. एंड देन देयर इज अ हीटिंग चेम्बर, फिर उसके साइड में लोडिंग चेम्बर है, फिर उसके साइड में हीटिंग चेम्बर, लाइक दिस वन. दिस साइड व्यू से आपको क्लियर कर दिखेगा, जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है यहाँ पे. या And so, for what purpose condensate is used? कंडेंसेट बेसिकली जो भी गैस निकलता है ना, Yes, sir. गैस कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको फिर कंडेंसर से यूज कर देंगे किसी और काम के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली गैस विल बी देयर, सो दे आर कंडेंसिंग दैट गैस. अच्छा. और ये यहाँ से कंटिन्यूस निकल जाता है यहाँ से. हेलो. या हाँ सर, इस प्रोसेस में मतलब स्मोक जनरेट नहीं होता क्या सर? नहीं, स्मोक जनरेट नहीं होता नहीं इसमें, क्योंकि आप बर्न नहीं कर रहे हो. स्मोक व्हेन इट विल जनरेट, इट विल गेट जनरेटेड व्हेन यू आर बर्निंग इट. सो हियर यू आर नॉट बर्निंग इट, यू आर जस्ट हीटिंग इट. ओके. तो उसके अंदर जो वोलेटाइल मैटर रहता है, वोलेटाइल मैटर मीन्स जो गर्म करने से निकल जाता है, दैट मैटर जो रहता है, बिकॉज बर्निंग में अगर वो साथ में रहता है वोलेटाइल मैटर, तो क्या होगा, वो स्मोक जनरेट करेगा. बट ये आप उसके साथ उसको एयर ही नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग द एयर. सो इन एब्सेंस ऑफ एयर, इफ यू आर हीटिंग इट, पर वोलेटाइल मैटर निकल जाता है ओनली, बट इट इज नॉट जनरेटिंग. ओके सर. और सर इसमें डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रहा है ना? No, because you can see here there is a gap. There is a coal is there, and then there is a gap. So this heating, if you see this view, है ना? Yes, sir. The notation. अगर आप यहाँ पर देखोगे, so there is a brick lining. Heating और coal के बीच में there is a brick lining. So heating is not there at all in contact with that one. So there is no direct. Yes, sir. Okay. So if it is clear, then we will move to the DRI process. Okay. So in any case, if you get any query, we can at the end of today's session we can also discuss. So now coming to the DRI. So what is it? It is directly reduced iron. So what do you mean by directly reduced? You are reducing the iron ore and improving its iron content. क्योंकि जैसे हमने देखा था वेरियस ओर्स जो है उसमें आयरन कंटेंट कितना रहता है? कैन एनीबडी टेल मी हेमाटाइट में कितना रहता है आयरन ओर? हेमाटाइट आयरन ओर में आयरन कंटेंट कितना होता है? 62%. है ना? 62%. यस. मैग्नेटाइट में 62 to 68. 62 to 72. तो 62 से 72% के आसपास आयरन और आयरन कंटेंट रहता है.
सो इसका मतलब बाकी सब क्या है उसमें, इट इज नॉट आयरन. ओके, सो अगर आपको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में यूज करना है, दैट इज अ डिफरेंट रूट वेयर यू यूज द स्क्रैप. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम क्या यूज करते हैं मोस्टली, इट्स अ स्क्रैप, बिकॉज ब्लास्ट फर्नेस का जो ऑपरेशन है वो वही लोग कर सकते हैं जहाँ पे वॉल्यूम बहुत है. यू जस्ट इमेजिन you are producing 9,000 tons of hot metal through the blast furnace every day, and small scale पे वो इतना क्या नहीं रहता है, वायबल नहीं रहता है. जो टीएमटी वगैरह बनाते हैं तो या फिर कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं, एवरीबडी कैनॉट अफोर्ड टू हैव द ब्लास्ट फर्नेस. इवन बड़े बड़े स्टील प्लांट में भी जो है, इवन टाटा स्टील थाईलैंड की बात मैं करूँ, दे हैव द ब्लास्ट फर्नेस बट दे आर नॉट टेकिंग इट that into operation. They are still using through the blast furnace, the scrap route. तो जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्क्रैप डालते हैं, instead of that people can use the DRI also, or it can be used in conjunction with the scrap. क्योंकि स्क्रैप में that we discussed, it has relatively higher amount of tramp element. और क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट द केमिस्ट्री. अलग अलग सोर्सेस से स्क्रैप आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बाकी जो भी अलाइड इंडस्ट्री है, मशीनिंग शॉप्स है, हर जगह से स्टील स्क्रैप आता है. एंड यू कैन नॉट चेक द कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टील स्क्रैप व्हाट वी आर गेटिंग. सो देयर इज अ या The tramp element is nothing but the scrap elements. The item which forms tramp with like what you call tramp. You can say tramp element or trace element. It is basically these are unwanted and unadded. Intentionally add नहीं किया गया इनको in the steel. These are present because it was present in the iron ore. so like calcium silicate, is a tramp element. No, calcium silicate, yeah, it is a gangue material impurity, but silicon is present या फिर phosphorus is present as a elementer, because steel में जो रहेगा it will not be in the form of some compound. Okay, it will be in the form of element, that is phosphorus, sulfur, silicon, इस तरह से रहेंगे उसमें. So these are the unwanted material tramp elements present in the steel. Okay. And Yes. automobile में जैसे they might be requiring some alloying, जैसे stainless steel का scrap आ गया गलती से उसमें. So what will happen? The chromium percentage will increase in the steel. So that this is, and for a plain carbon steel requirement, for your wire drawing, if you require plain carbon steel with a lower amount of chromium, and electric furnace is using a scrap which is having higher amount of chromium, then how you will control that one? So that controlling the chemistry is difficult using the variety of the scraps. उसमें तो फिर जो डोमेस्टिक स्क्रैप निकलता है वो भी जाता है, टीन भी जाता है, सब कुछ जाता है. सो DRI का जो प्रोसेस होता है, डायरेक्टली रिड्यूस्ड आयरन, जो छोटे छोटे स्टील मैन्युफैक्चरर्स है, उन बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स है विच आर मेकिंग द स्टील थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड इंडक्शन हीटिंग फर्नेसेस, उसमें क्या करते हैं, दे आर यूजिंग द DRI इन एडिशन टू द स्क्रैप. तो क्या होता है, स्क्रैप में जो ट्रैम्प एलिमेंट है उसको एक लेवल तक ये फिर डाइल्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू यूज 50% ऑफ DRI which is almost virtually free from any of the tramp element, और उसमें chromium percent for example 0.10% है in the electric arc furnace heat or scrap, और 50% आप अगर DRI यूज करते हो तो डेफिनेटली जो chromium कंटेंट है it will drop down to 0.05% in the final heat. So that is the purpose of using the DRI. अगर DRI की बात करें तो क्या होता है, इट्स अ डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन. तो आयरन में क्या है, इट्स बेसिकली अ ऑक्साइड, Fe2O3 है और Fe3O4 है. आयरन ओर में क्या है, इट इज नथिंग बट अ Fe2O3 और Fe3O4.
तो हमको उसमें से ऑक्सीजन अगर हटा देंगे तो यू विल गेट द एलिमेंटल आयरन. So in the directly reduced iron process, or you can say sponge iron process, what they will do, they will remove the oxygen from this iron ore, but they will reduce it in the solid state. And blast furnace में कौन सी state में reduce होता है वो? It will convert to the molten state in the blast furnace. But direct reduced iron जो रहता है, DRI जो process है, in this process there is no melting of the iron ore. Clear है? Blast furnace में you have to melt it. It will get melted. The iron ore get melted. But in the DRI, directly reduced iron process or directly reduced iron manufacturing process, it is not melted. The iron get reduced in the solid state only. और फिर reduction कैसे करेंगे? Either it will be with the help of reducing gases like hydrogen or carbon monoxide, or you can use the solid state reducing agent like the coal. जो कार्बन में जो कोल यूज कर सकते हो आप, in which there is a presence of carbon, because carbon can also reduce the iron to form carbon monoxide or carbon dioxide. उसकी रिएक्शंस आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखी है. सो बेसिकली DRI जो दिखता है इस तरह से रहता है, वो हैविंग डायमीटर ऑफ अराउंड 4 to 20 मिलीमीटर. आप उसको छोटे लाइक बॉल शेप भी बना सकते हैं, पैलेट्स बना सकते हैं, या इट कैन बी फॉर्म एज अ ब्रिक्स, स्मॉल ब्रिक्स जैसे भी उसको बना सकते हैं. ओके, विच इज कॉल्ड एज द हॉट ब्रिकेटेड आयरन, HBI बोलते हैं उसको. दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट. सो जो आयरन ओर है उसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं टू इम्प्रूव द आयरन कंटेंट इन द ओर. और इस प्रोसेस में जो आयरन कंटेंट होता है वो बढ़कर 95-97% तक हो जाता है. जो अभी हमारे पास 60 to 72% था, नाउ द आयरन कंटेंट इज 95+. अब DRI यूज करना है बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इट इज द अल्टरनेटिव टू द एक्सपेंसिव ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस. बिकॉज ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोसेस है इट इज द एक्सपेंसिव वन. एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न. जो DRI प्रोसेस है उसमें जो CO2 प्रोड्यूस होता है, इट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड इन दी blast furnace operation. But another disadvantage is that इसकी जो productivity है it is low compared to the blast furnace. इसलिए it is not that extensively used. But अभी इसका जो use है ये बहुत increase हो रहा है day by day. Year by year it is DRI process is being extensively used because small players जो है using electric arc furnace, induction furnaces, they use the DRI. So could you give me the examples of DRI process where it is followed in India? इसमें जो JSPL के प्लांट है, JSW के प्लांट है, वहां पर भी है इनके पास DRI प्लांट. और लॉयड स्टील है महाराष्ट्र में, एक चंद्रपुर करके जगह है, वहां पे लॉयड स्टील है, वहां पर भी DRI प्रोसेस से ये बनता है. Okay. दिस इज द DRI. और DRI किससे बनता है? 2 प्रोसेस से बनता है. वन इज अ शाफ्ट प्रोसेस, जैसे स्टैटिक है ना, इट्स अ स्टैटिक वन. ये इसमें क्या होता है, गैस सप्लाई की जाती है. इन दिस there are 2 types of DRI processes. One is a shaft process and another is a rotary kiln, जिसके अंदर जो बड़ा सा किल रहता है it is in the rotating condition. तो हम पहले शाफ्ट प्रोसेस का देखेंगे. Here you need the
reducing agent in the form of gas. किस फॉर्म में रहता है reducing agent? It is in the form of gas. So gas कौन सी यूज करेंगे for reduction? Which gas is used? अभी हमने देखा था, can somebody tell Hydrogen. me which gas is used? और Hydrogen. हाँ, yes, Carbon hydrogen is correct. monoxide. Yeah, carbon monoxide. Good. So these two gases are used in the shaft process as a reducing agent. और reducing agent का काम क्या है? क्या reduce करना है उसको? आयरन ऑक्साइड को आयरन में चेंज करना है. Yeah, so it has to expel the oxide or oxygen bonding from the iron. अब उसकी रिएक्शन आप अगर देखोगे, टेम्परेचर जो रहता है शाफ्ट फर्नेस का, इट विल बी अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. जो कार्बन कंटेंट डीआरआई प्रोसेस से आता है वो कितना होता है? ओनली 2%, अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास. और प्यूरिटी जैसे मैंने बताई ऑलमोस्ट 95-97%. अभी कुछ एडवांस प्रोसेस भी आई है जिसके अंदर पीपल आर टारगेटिंग टू हैव 98-99% प्यूरिटी थ्रू द डीआरआई प्रोसेस. अभी कार्बन कंटेंट इसमें जो है इट इज ओनली अराउंड 2%. बट व्हेन वी गेट इट थ्रू द ब्लास्ट फर्नेस, हाउ मच इज द कार्बन कंटेंट? जो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड दिस. हाउ मच इज द कार्बन कंटेंट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस? 3 to 4%. सही है, 3.5-4%. यू कैन से 3 to 4% also is the correct one. So people should revise. I am uploading the videos also. You can go through the videos or the content also. ना PDF फाइल रहती है, just 8-10-15 स्लाइड्स है. You should go through that one. जो यहाँ पे अगर शाफ्ट फर्नेस देखते हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऊपर से क्या करेंगे? लोड करेंगे. एंड दैट विल बी पैलेट एंड लंप ओर रहता है. सो मैंने जो बताया था आपको, पैलेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? इस तरह के प्रोसेस में जब आप यूज करोगे, वेदर इट्स अ ब्लास्ट फर्नेस और वेदर की जो फाइन्स बन गए हैं ड्यूरिंग क्रशिंग, जो आयरन ओर का फाइन बनता है, पाउडर बनता है, उसका आप क्या करोगे? यू कैनॉट यूज इट इन एनी प्रोसेस एट ऑल. जहां पर भी आप देखोगे, यू हैव टू पुश द गैस. आपको रिड्यूसिंग गैस हमको वो पूरे अंदर से लेके जाना है. सो इफ यू आर पुशिंग द गैस, और जो हमने मटेरियल अंदर डाला हुआ है आयरन ओवर, इफ देयर इज नो स्पेसेस बिटवीन दैट, अगर आप जितना छोटा यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यू हैव द मार्बल आप अगर आप किसी कांच की बर्नी में रखते हो, सो यू कैन इजीली पोर द वाटर और एनीथिंग, इट कैन इजीली गो. बट अगर आप सैंड भर दोगे तो व्हाट विल हैपन? जो फाइन सैंड रहती है, तो वेदर वाटर विल पर्कुलेट थ्रू दैट वन वेरी फास्ट as efficiently as it is percolating through the marble? It will not, because there is no gap between the two solids or material. That's why we use pellet or lump ore. Lump ore means around 15 millimeter, 20 millimeter उसका साइज रहता है. And pellet, जो pelletization process हमने पढ़ा था, this is for this one. Okay, so now when the pellet and lump ore is spread from the top, anybody can tell me why there are two cones are there? What would be the reason behind this one? क्या होगा? Why there are two sections, two hoppers are there? Why not only one hopper? If one hopper is there, what will happen? Can anybody imagine what will happen if there is only one hopper? Only one hopper here instead of these two. What will happen? स्टोरेज के लिए सर. हाँ, स्टोरेज के लिए तो है definitely, but if it is only one, then what will happen? Because anyhow that process takes longer time, so it is not that you have to store it there only.
what will happen if you open it? If it is only one and you open it, what will happen? Heat Best loss. gas best gas हो जाएगा फिर. What will happen? The waste gas. People keep yourself mute. Huh? Don't open your microphone in between. Unmute it only at the time of speaking. So if we have one hopper only, what will happen if we open this one? The flue gas will move through this section also, and it will go to the atmosphere. Whereas if you find this structure, this flue gas is now going to some treatment, scrubber या कहीं पे जाता है. It is not released to the atmosphere directly. So you have to have two hopper, क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा, और देन आप इसको खोलोगे तो यहाँ का इसके अंदर आ जाएगा. So there is no direct removal of the flue gas from the feeding side. अब यहाँ पे आप देखोगे that reducing gas is put it from here. आयरन ओर की जो पैलेट तो वो है यहाँ से आते हैं, इसमें बाकी कुछ नहीं है ना, बाकी कोक वगैरह कुछ भी नहीं डाला जा रहा है इसमें, यहाँ से जा रहा है, and you are just pushing the reducing gas from here. और इससे क्या होता है फिर, सॉरी, आयरन ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है टू फॉर्म द आयरन. उसके बाद कूलिंग गैस पुश की जाती है यहाँ से, and you will get the directly reduced iron, or you can say sponge iron here. So it is divided into three zones: throat, reduction zone, and then cooling zone. So this is how you get the sponge iron or directly reduced iron through the shaft furnace. ठीक है. अगर आप शाफ्ट फर्नेस का ये देखना चाहते हो स्कीमेटिक, इट इज अ डिफरेंट स्कीमेटिक. जो इनलेट वाला एरिया है, डू नॉट गो टू मच डिटेल इनटू दैट वन, क्योंकि जो आपको रिड्यूसिंग गैस चाहिए उसके लिए फिर नेचुरल गैस का क्रैकिंग होता है. दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सो उसके लिए लगती है नेचुरल गैस एक्चुअली, है ना. देन देयर इज अ different unities there, and out of that they will get the fuel. तो इसको आप छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग. आप यहाँ पे देखिए, दिस इज द शाफ्ट फर्नेस, और शाफ्ट फर्नेस का जो आउटपुट है, ओके, शाफ्ट फर्नेस का जो आउटपुट है, इट कैन बी DRI, दैट इज डायरेक्टली विद आयरन, और यू कैन गेट HBI also. What is HBI? Hot briquetted iron. So hot briquetted iron का फोटो मैंने आपको दिखाया था in the start. This is the hot briquetted iron. इस तरह से दिखता है. अप्रोक्सीमेट साइज 110 by 50 by 30 मिलीमीटर, छोटा छोटा ही रहता है, 4 इंच बाय 2 इंच बाय अराउंड 1 इंच की थिकनेस. तो ये छोटे छोटे ये बनाते हैं, उसके ब्रिकेट बनाते हैं. सो इट कैन बी, जो DRI का आउटपुट है शाफ्ट फर्नेस का, इट कैन बी DRI स्टोरेज एरिया में जा सकता है, या हॉट ब्रिकेटिंग करके उसको एज अ ब्रिकेट यूज कर सकते हैं, या इफ इट इज मेड इन दी प्लांट वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यू विल डोंट नीड टू कूल दिस वन. आप उसको कूल नहीं करोगे, you will directly send it to the electric arc furnace where the distance is less than 40 meters. तो वहां से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे भेज देंगे. और जो हॉट डायरेक्ट रिड्यूस आयरन है कहा जाएगा थ्रू द कन्वेयर से कहा जाता है सीधा अपना इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, और उसको ट्रांसपोर्ट थ्रू द ट्रक भी कर सकते हैं. अगर 100 मीटर से ज्यादा है तो दे विल यूज द लॉरी टू ट्रांसमिट टू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस. सो
in this view, you can easily see that yes, it is used mostly in the electric arc furnace or induction furnace. So, secondary route जिसको बोलते हैं, secondary route I am talking. One is the virgin route, another is the secondary route. So electric arc furnace is the secondary route, but not secondary steel making. It's a primary steel making. You are not getting the final composition in this one. After that, again you have to have secondary steel making to remove the unwanted material again, or to get the final composition. So DRI का जो shaft furnace है, I hope this is clear to you people, because now there is another rotary kiln process is there. We will quickly go through that. Second process is of the rotary kiln. जैसे rotary kiln बोला है, इसका मतलब क्या है? It is rotating. But shaft furnace में क्या था? It is at one place only. ठीक है? But इसमें क्या करते हैं? It is rotating, continuously rotate करते हैं. And वहां पर हमने as a reducing media क्या यूज किया था? गैस यूज किया था. And what we will use here as a reducing media? What we will use? We will use coal, है ना? चारकोल जो रहता है, coal as a reducing media. तो कोल के अंदर जो कार्बन होता है, it will act as a reducing media. जो कोल कोक बनाने के काम में नहीं आता है, वो भी कोल जो होता है, that can be used as a reducing agent here. You are not using coke here because you don't have to burn it. या बर्निंग नहीं हो रहा है, फुल बर्निंग नहीं हो रहा है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में हो रहा है, उसके टेम्परेचर पे बर्निंग नहीं हो रहा है. नाउ जब रोटरी kiln है, उससे जो आउटपुट निकलता है, इट विल बी टू थिंग. वन इज द DRI, directly with this iron, and there is a char mix. Char mix is what? Because you are putting the coal, so it will also get fused. तो उसका भी एक मिक्स वहां से निकलता है. एंड उसको फिर सेपरेट कैसे करेंगे? हाउ यू विल सेपरेट दैट वन? फॉर दैट अ मैग्नेटिक सेपरेटर्स आर यूज्ड इन लाइन. जो रोटरी kiln होता है, वो बहुत स्लोली मूव करता है. ऑलमोस्ट आप समझिए वो 10, 15, 20 मीटर तक के वो राउंड ऐसे शेप के पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े. एंड इट इज एट अ इंक्लाइंड लेवल. इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, इट इज स्लाइटली इंक्लाइंड. And it is moving at very slow speed. You can say 0.2 to 1 RPM. different process में different रहता है. Angle भी यहाँ पे लिखा है. It is angle at around 2.5 degrees. It is not totally like this one, slanted. Very small angle. So that during the rotation, our charge will move slowly toward the exit, toward the discharge side. And it takes almost 7 to 8 hours from feeding side to the exit side. So here you can see this process. You don't focus too much. Now here you can say there is a ore, there is a coal, and there is a dolomite, that is a line. ये तीनों यहाँ पर है, and you are feeding it through this kiln, through the rotary kiln. अब रोटरी kiln से मूव होते 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 इसके अंदर क्या होता है? उसका रिडक्शन शुरू हो जाता है. ये जो क्रॉस सेक्शन है, हियर यू कैन सी, यहाँ पर जो है ये मूवमेंट चल रहा है इसका. इट इज रोटेटिंग लाइक दिस वन, एंड द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस लाइक Fe2O3 plus 5CO will give you 2Fe plus 3CO2. टेम्परेचर कितना है? अराउंड 1000 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये टोटली कंटिन्यूसली रोटेटिंग है. ये जब यहाँ पे होता है, एंड यहाँ से कोल का भी कंटिन्यूसली यहाँ से ब्लो करते हैं. जो फाइन्स रहते हैं, कोल फाइन्स, वो ब्लो करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल्सो. तो प्राइमरी एयर इधर से जाती है, एंड सेकेंडरी एयर जो है वो उसके साइड से इनपुट होते रहती है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सेकेंडरी एयर और प्राइमरी एयर का काम है वो टेम्परेचर मेंटेन करना वहां पर थ्रू द यूज ऑफ द कोल हियर.
when it comes out of this one, it is going through the rotary cooler. Cool करना है because it is at a very high temperature. So you have to cool it down through the rotary cooler, and now you are getting DRI plus char. Char means it is the चारकोल का जो चारकोल और बाकी impurities का मिलके जो कंपाउंड बनता है, that is the char. After that it is crushed and screened. तो 10 mm के ऊपर जो रहते हैं, it will move through this conveyor here because यहाँ पे screen है ना. तो 10 mm and above will come to this side, below वाले नीचे screen में जाएंगे. It will come to this side, and here you have what you have magnetic pulley. So अगर magnetic pulley है तो क्या करेगा? The iron content is there, so it will stick here because now it's not like a core. It is now having 95+% of iron, so it will definitely have the magnetic property, and it will cling to this magnetic pulley till this point, and after that it will get released. और रिलीज होने के बाद इसको यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज +10 मिलीमीटर से जो आते हैं वो कलेक्ट हो गए. इसको क्रश करते हैं और वेस्ट यहाँ से निकल जाता है, विच इज नॉन मैग्नेटिक. नॉन मैग्नेटिक है तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ द स्पीड वो उसको थ्रो कर देगा ऑन दिस साइड. तो यहाँ पर वेस्ट कलेक्ट हो गया. नाउ सेकंड, यहाँ पे भी वही होता है, स्क्रीनिंग होता है. यहाँ पे 3 mm to 10 mm जो है वो यहाँ पर आ गए. अगेन सेम थिंग, वहाँ पे भी मैग्नेटिक पुलिस है. यहाँ पर जो वेस्ट है वो चला जाएगा यहाँ पर, और जो ओके मटेरियल है वो नीचे आ जाएगा. एंड जो स्क्रीन भी है वहाँ चला जाएगा. 3 mm सॉरी -3 mm अप टू 3 mm जो रहते हैं वो फिर यहाँ पे जाके DRI फाइन. वो DRI फाइन है तो उसको फिर और डुप्लीकेट बना के आगे भेज देते हैं. So there are two processes. Yeah. So what is the use of submerged air injection process? This is basically because you have to have the air for reaction also, na? Okay. Air for reaction. One air you are getting from here, primary side, Okay. and secondary air you are getting through this one. Yes, sir. So basically it is required for the reaction. One air is used because यहाँ पे आप देखोगे तो it is coal. Coal is coming from this side. Yes, sir. यहाँ पे भी कोल है, तो फ्रॉम द फ्रंट साइड जो होता है वहां से भी कोल को ब्लो करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड देन सेकेंडरी एयर फॉर द रिएक्शन. Sir, I've not understood, sir. So why they blow coal For the in the temperature. second? Because they have to maintain the temperature, na? Temperature in that particular this one degree centigrade. 1000 and 1100 temperature अगर हमको maintain करना है, so from where you will get that temperature? Yes, yes, understood. Yes. So by this only you will get by blowing the coal fines. Basically coal fine blow करते हैं ताकि वो burn हो जाते हैं, and it will form the CO2 also. So these are the two processes what we learn for DRI. Sir, DRI कहाँ पे secondary होता है? Yeah. सर सेकेंडरी एयर है वो भी कूलिंग का काम करता रहेगा ना? हाँ, yes. Not only cooling only, it will have a reaction also. You have to have the air inside for the reaction purpose also. एक तो क्या करता है, जो C डायरेक्ट कार्बन है जो आयरन ओर के साथ है वो भी रिएक्शन कर रहा है उनका, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा एयर जा रही हमारा, तो दैट विल हैव दिस 3CO एंड इट विल रिड्यूस द आयरन फर्दर, बिकॉज डायरेक्टली एक ही रिएक्शन में रिड्यूस नहीं होता है वो. Fe2O3 का Fe3O4 बनता है, Fe3O4 का FeO बनता है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू आयरन. इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. Okay. Still, I will Sir, again search also what is the exactly that secondary air and that particular, if literature is there, I will share. Yeah. सर ये जो हम लोग जो इसमें रोटेट कर रहे हैं ना, किल्न को रोटेट कर रहे हैं ना, हाँ, तो रोटेट कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद रिएक्ट होके वो बन जाएगा, वो कैसे रहता है?
वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? वो प्रोसेस ही वैसे, जैसे आपका जो फर्नेस में वायर आप डालते हो, आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाते हो वायर, बिकॉज यू नो कि हम अगर इस स्पीड पे चलाएंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सेम थिंग इज हियर, द प्रोसेस इज सच अ डिजाइन कि वो 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये है, एंगल पे है, उसको निकालते नहीं है, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द एंड। दैट्स व्हाई आई सेड ना, इट इज inclined at 2.5 degree centigrade. It is from angle of the skin is at 2.5 degree centigrade. नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि अभी इसमें तो हम लोग आयरन ओर डाल रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो आयरन ओर का क्वालिटी क्या है क्या नहीं है वो कैसे क्लियर होगा? वो भी तो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, इसमें पैरामीटर रहेगा एक। हाँ, तो दैट्स व्हाई ना, जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट प्रोसेस इज लाइक दैट, आप कुछ भी उठा के नहीं डालते हो ना। दैट्स व्हाई आई सेड यू विल पुट आयरन ओर के पैलेट्स है, इसमें भी वही होता है, आयरन ओर के पैलेट एंड विथ द लोवेस्ट पॉसिबल गैंग मटेरियल, है ना। जो क्रॉस रोटेशन की प्रोसेस वगैरह जो बनी है, मैग्नेटिक सेपरेशन की प्रोसेस जो बनी है, इट इज फॉर सच एप्लीकेशन ओनली। इसमें आप जितना कम गैंग मटेरियल वाला ये लोगे, और लोगे हाई क्वालिटी का, इट इज बेटर। क्योंकि ये जो प्रोसेसेस है ना, इट इज लोकेटेड, जैसे हमारी ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह है, दे आर लोकेटेड नियर टू द माइन, जहाँ पे आयरन ओर का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कम होता, कम खर्चा हो, इसलिए वहां पे लोकेटेड है। ऑलमोस्ट आपका 40% 50% आयरन ओर का ही कन्वर्जन हो पाएगा आयरन में, बाकी तो सब आपका स्लैग है, वेस्ट है। सो इस प्रोसेस में भी अगर उतना निकलने लगा तो फिर इट विल नॉट बी वायबल, सो दे विल रिक्वायर हायर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। सो पहले कुछ बेनिफिकेशन प्रोसेस करके भी वो लोग लेते हैं। ओके ओके, क्लियर ना, क्योंकि एक साइड से फीड करते जाएंगे, देर इज अ 8 आवर्स 9 आवर्स का जो भी साइकिल डिसाइडेड है, इंक्लाइंड है एट 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थोड़ा 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 जब मूव होता है तो इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग। मूवमेंट करने का पर्पज क्या है? बिकॉज द सरफेस विल कम्स इन कॉन्टेक्ट। मूवमेंट करने का दो पर्पज है, वन ऑटोमेटिक आगे आगे जाना चाहिए वो, एंड सेकेंडली योर सरफेस कंटिन्यूसली चेंज। आप जब उसको मूव कर रहे हो तो आपका जो आयरन ओर के पेलेट्स वगैरह, उसका सरफेस कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा एंड रिएक्शन फास्टर होते जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। so this is the DRI production in million metric tons from 2012 to 2020. so आप देखो कि ईयर बाय ईयर इट इज बढ़ ही रहा है। FY 2020 का ये जो लास्ट में जो इशू हुआ उसके कारण है वो, बट यू कैन सी दैट यस इट इज इम्प्रूविंग, बट इट इज ओनली टू द 27 million metric tons only. Steel accounts to only 10 to 20% of the total iron production. ठीक, so it is because of the production capacity, it is not as widely as used of the blast furnace. जहाँ पे बड़ी बड़ी कैपेसिटी है वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस ही यूज होता है। सर क्या सर DRI प्रोसेस में शाफ्ट प्रोसेस का भी यूज करते हैं और रोटरी प्रोसेस का भी यूज करते हैं सर? अगेन इट डिपेंड्स ऑन दिस वन, जो बिकॉज जो रोटरी किल आया इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, शाफ्ट प्रोसेस पहले से चल रहा है, आउटपुट दोनों का सेम है, देयर इज नथिंग चेंज इन दैट वन। अगर आपके पास शाफ्ट प्रोसेस के लिए नेचुरल गैस है आपके पास, है ना, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने नेचुरल गैस पहले तो ने क्या इसके लिए देके रखी है, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है उनके लिए रखी है, तो DRI प्लांट वालों को नेचुरल गैस नहीं मिलता है। सो दैट इज अ कॉन्स्टेंट बेसिकली। ये शाफ्ट प्रोसेस में अगर आपके पास नेचुरल गैस अवेलेबल है एज अ रिड्यूसिंग गैस, तो आप फिर शाफ्ट प्रोसेस जा सकते हो, एंड अगर आपके पास कोल अवेलेबल है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप फिर रोटरी किलिंग प्रोसेस में जा सकते हो। So it is from this one requirement point of view for the electric arc furnace, both are same. आप
रोटरी से वाला रोटरी फर्नेस जो निकलता है उसका आउटपुट एंड शाफ्ट फर्नेस का आउटपुट, देयर इज नो एज सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट्स ओनली द टेक्नोलॉजी डिफरेंस। ओके सर। है ना, जैसे फर्नेसेस होती है बहुत सारी, कोई एलपीजी फायर रहती थी, कोई एलएनजी फायर रहती थी, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास एलएनजी अवेलेबल है तो यू विल हैव एलएनजी फायर फर्नेस। ओके सर। So I think we can stop for today's session. There is a little bit about the now we are ready with the material, है ना। हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस में देने के लिए लाइम, कोक, आयरन ओर के बारे में सब हो गया हमारा। एंड वी हैव लर्न अबाउट द डीआरआई ऑल्सो, डीआरआई के बारे में भी हो गया। सो नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टील मेकिंग। कल हम क्या करेंगे, 10-15 मिनट के लिए ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शंस देख लेंगे, हाउ द रिएक्शंस टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस, एंड देन यू विल हैव द what you have the sponge iron, sorry, not sponge iron, pig iron from the blast furnace. Now this blast furnace molten metal will be used for the primary steel making. Okay, so we will study about the basic oxygen furnace, and this DRI or scrap will be used for the electric arc furnace. So we will study about both the furnaces tomorrow. And then day after tomorrow we will study about the secondary steel making, that is refining, how the refining will take place. Now the molten metal you get will have higher amount of carbon. We will study how the carbon will be reduced and how the impurities coming from the blast furnace material, it will be removed. Okay, तो जैसे हम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे रिएक्शन में ऑल दिस आयरन, मैंगनीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, एवरीथिंग विल बी देयर इनसाइड द मटेरियल, दिस pig iron. So at the bottom you can see all these elements are there from the pig iron. So the primary steel making will be to reduce the carbon content and reduce some of the impurities, and the secondary we will refine the steel further to get the desired composition. So हमारा initial stage पूरा हो चुका है, and now we will move to the next stage. So by Friday, tomorrow and day after tomorrow, I think we will be able to finish the steel making process. If at all there is something left, then again we can start in the next session on Monday. Okay. So tomorrow we will discuss little bit about the blast furnace, and we will discuss the primary steel making, electric arc furnace, and the basic oxygen furnace, steel making furnace. Okay. So if any doubt is there, you can ask, or we can end the session.